हाय वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है सिद्धार्थ सदेव और आज मैं आया हूँ इंडिया आर्ट फेयर। इस बार मैं कोई इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे नहीं हूँ, इस बार कोई मैं ट्रैवल ब्लॉग पे नहीं हूँ, इस बार मैं हूँ एक आर्ट फेस्टिवल पे। आर्ट फेस्टिवल ऐसा जहाँ पे हर टाइप का मॉडर्न आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट आपको मिलेगा। एवरीथिंग अंडर वन रूफ, जहाँ पे आपको परचेजर्स, बायर्स, आर्ट एंथुजियास्ट, आर्ट क्रिटिक्स, speakers and all the delegates and all the ministers are present here in this art fair। ये किसी बाहर की कंट्री में नहीं है, ये इंडिया की कैपिटल दिल्ली में होता है हर साल इन द मंथ ऑफ फरवरी और ये 4 दिन के लिए चलता है। फर्स्ट डे इज़ ऑलवेज द मेन डे बिकॉज यहाँ पे BMW का VIP प्रीव्यू भी होता है। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आज संडे का टाइम था तो वी आर हेयर ऑन अ संडे, बट we are still pumped up, we are still here to experience what India Art Fair has to show us this time, and मैं आपको लेके जाऊँगा एक डिटेल टूर पे। So stay with me, don't go anywhere, this is going to be really fun। Also सिर्फ आज हम यहाँ पे आर्ट फेयर देखने नहीं आए हैं, यहाँ पे हम नए नए आर्ट फैक्ट्स नहीं देखने आए हैं, हम यहाँ पे नई नई पेंटिंग्स या स्कल्पचर्स नहीं देखने आए हैं, हम यहाँ पे ये भी जानने आए हैं कि यहाँ पे कस्टमर क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं, आर्ट एंथुजियास्ट क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। यहाँ पे जो यंगस्टर्स, मुझे इस बार काफ़ी यंगस्टर्स मुझे दिख पा रहे हैं इस भीड़ में, वो किस उम्मीद से आए हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस लेके आए हैं। एंड इवन आर्ट इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी बिलियनियर्स HNIs टू इन्वेस्ट देयर मनी ऑल्सो नाउ डेज। सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम देम एज वेल दैट कि उनके लिए आर्ट सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ें मायने रखती हैं, what are the considerations and how things work in the art industry। And we will also get time and we will speak to a few very famous galleries जो अपनी आर्ट्स के को एक्सप्लेन करेंगे, उसके पीछे का कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, and they will also tell us that what HNIs expect from them every year whenever they come to this special। So I have finally found a group of teenagers, it's their first time and they are here for India Art Fair। And what brings you to India Art Fair? We are also artists. Yes, we are. You're also artists? Yeah. Oh wow, nice. So which college you are in? What studies We are studying Bachelor's of BFA in Lucknow University. So when you say you are yourself artist, so you are into painting, sketching, sculpture, what? Yes, I am into digital graphic design. I am also Okay, same. painting. So when you come to India Art Fair, you must have heard about India Art Fair before also. So what are your expectations or what brings you here actually? Since you said that it's your first time, what brings you here? I think some beautiful installations that we can see. Works, of course. And how did you hear about India Art Fair? Through our teachers and seniors. Through your teachers and seniors. So I hope you have a fantastic time. Please go ahead and enjoy. Thanks. Thank you so much. एंट्री यहाँ से। सो फाइनली हम एंटर कर गए हैं इंडिया आर्ट फेयर के ऑडिटोरियम में। ये पहला ऑडिटोरियम है एंड अंदर आते ही आपको कंटेम्प्रेरी आर्ट का एक बहुत अच्छा नमूना मिलेगा। आप ये इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे इंडिया की जो सबसे फेमस गैलरीज़ हैं, जो सबसे फेमस आर्ट गैलरीज़ हैं, दे कम अंडर वन रूफ एंड दे प्रेजेंट देयर टॉप वर्क्स एट इंडिया आर्ट फेयर। एंड व्हेन आई से टॉप वर्क्स, आपको इस टाइप का यहाँ पे टॉप वर्क दिखेगा। जस्ट चेक दिस आउट।
एंटर करते ही इतने सारे हॉल्स के अंदर इतने प्यारे प्यारे आर्ट पीस देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे ये एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है सिमरन गिल, उनकी आर्ट वर्क्स है, बेसिकली फोटोग्राफी आर्ट है। इट इज़ नॉट एनी कैनवस और ऑयल पेंट और एनी वाटर कलर आर्ट, दिस इज़ क्लियरली प्योर फोटोग्राफी आर्ट। और यहाँ पे भाई साहब इवन आज संडे है, लास्ट डे, तब भी कितना रश है आज। ये देखिए, ये ऑयल ऑन कैनवस, ऑयल पेंट ऑन कैनवस का एक बहुत अच्छा वो है, नमूना है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टू डेथ। तो ये जो आर्ट है ये कहा जा रहा है कि डिस्कार्डेड सिगरेट बट से बना हुआ है, which is really interesting. I know I'm going to need a beautiful stick. Oh yeah. I think everyone must have one at this point in time. He got me, you told her. So this is made out of cigarette butts. Yeah, discarded cigarette butt. Wow. So अभी मैं आया हूँ यहाँ पे
इंडिया आर्ट फेयर में और अभी अंदर घुसते ही हमें इतना सब कुछ देखा है, इतने प्यारे प्यारे मास्टरपीस दिखे हैं और तभी मेरी नज़र पड़ती है इस पे। एंड ये आर्ट वर्क, बिलीव इट और नॉट, इज़ मेड आउट ऑफ डिस्कार्डेड सिगरेट बड्स, बिलीव मी, एंड ही इज़ द माइस्ट्रो बिहाइंड इट, ही इज़ artist Prashant Pandey, and it is a lovely piece of art. It grabbed our attention from a kilometer, you could say. So Prashant, please explain about your art piece. Yeah, hi. Thanks for giving me that beautiful tag, that 1 kilometer. Some spectator told me, as my show is going on, solo show is in Mumbai, by the name of Biography. So one spectator told me it smells like a flower. So it's really in me. So this is a form of a leaf, and made out of each leaf, made out of like approx 5,000 discarded cigarette butts. And the title of my show is Biography. It's not my biography. So this whole show made by 350,000 discarded butts. There are 72 leaves over there in Mumbai. This is 3 over here. It's almost 15,000 discarded cigarette butts over here. It's non-toxic and woven together, having threads. And this is keen armature. It's go back to the tribute to the nature. And I start this, in my works. I play with abstract materials. I say I start where language ends. You were installing this art piece, right? It was coming together. What inspired you to make this, and that too out of recycling a waste material and making a miracle out of it? So that's a great question, but it needs a lot of time. Yes. If you see my practice, if you check me on Instagram or on Gallery Mascara website, so then you can come to know about my practice. I use many discarded materials, even though I've used urine, sweat, tears, formaldehyde for a specific work. I've used sugarcane bagasse, I've used fresh lime bagasse, I've used marble blast stones. I come from Jaipur, so my family is making, into making deities and statues. If you've seen the deities of Ram Mandir, it's made by my family. And the ISKCON deities in Delhi, also made by my family, by Pandey Murthy Bhandar. But in this context, I was very fascinated with this leftovers of the deities. Right. So what's the identity clash? And I just used to collect them, played with them, that the deities being prayed, kept in showrooms, and went to the temples and cared many things, and my family is throwing the waste every day. So that's how it's come, that how can be a common thing can be a hero. And this, when I saw this in and out everywhere in the world, this discarded word, so it wanted to speak that I can speak. So I've tried it. So here they are, back to tribute, and it's beautifully painted by such 15,000 paws with their lips, their breath, and the help of nature with beautifully canvas over here. Who could have thought something like a waste material can be of such utilization, and it can come together to make such, actually in his words, such a big hero.
हिसाब से आर्ट सिर्फ ये नहीं कि आपने कैनवस पे ऑयल पेंट के साथ एक अच्छी सी पेंटिंग बना दी या उसकी डेप्थ दिखा दी या बस कुछ एक स्ट्रक्चर बना दिया। कभी कभी आर्ट कई फॉर्म्स में होती है। जैसे आपको अभी एक फॉर्म दिखाता हूँ मैं, जो चीज़ आप अभी देख पा रहे हैं, अगर आप साइड से इसको देखेंगे, एक थ्रेड वर्क है बहुत प्यारा। एक्चुअली थ्रेड वर्क भी नहीं है, दिस इज़ लाइक कहते हैं ना प्लास्टिक के कार्डबोर्ड पैलेट्स होते हैं या स्ट्रिप्स होती हैं, जिनको अगर कलरफुल स्ट्रिप्स हैं अगर साइड से देखेंगे तो ऐसे लीनियर लाइंस लगती हैं जो एक कलर की एक रेनबो बनाती है। पर जैसे ही आप इसके सामने आते हैं, चेक आउट द पैटर्न चेंज। ऊपर वाला क्रिस क्रॉस हो जाता है एंड नीचे वाला ब्लॉक डिज़ाइन में आ जाता है। एंड इफ़ यू सी दिस फ्रॉम दिस एंगल, द कलर टोन ऑफ द लीनियर लाइंस चेंज। दिस इज़ द काइंड ऑफ आर्ट वी टॉकिंग अबाउट है। अभी एक और आर्ट पीस मुझे दिखा है यहाँ पे, विच इज़ बेसिकली एक्रेलिक ऑन कैनवस। दूर से देखने में मुझे लगा था बस कुछ नहीं है, बस एक पैटर्न है जिसमें बहुत सारे डॉट्स हैं। बट जैसे यू कम क्लोजर यू सी कि इसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों के गैदरिंग बना रखी है। दैट्स सो कूल। टॉक अबाउट डिटेलिंग एट इट्स फाइनेस्ट। अगर दूर से देखोगे तो इट लुक्स लाइक नथिंग बट अ पैटर्न डॉट्स, लॉट्स ऑफ डॉट्स पुट ऑन अ कैनवस। Leather things, that's what a lot of people are mistaking. And when you say MS sheet, what is MS sheet? It's a metal sheet. Oh, okay. That MS explains a lot. sheet. Wow. But that is really some, I must say, it's such a marvel that you have created something which looks like a leather. आपने नाम पढ़ा संधि. संधि is amalgamation of two arts. Okay. So गौन वाले जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी तो कहानियाँ हैं. Right. उसकी उन्होंने फॉर्मेशन दी है उसको, और बस्तर वाले आर्टिस्ट जो मेटल क्राफ्टमैन होते हैं उन्होंने इसको ये शेप में तैयार किया. सो दैट्स अ संधि बिटवीन द टू क्राफ्ट्स. It's a piece of art. Lovely.
वी आर स्टेपिंग इन द सेकंड ऑडिटोरियम. अभी तो एक ही कवर किया है, अभी 3 और बचे हैं. तो यहाँ पे अभी मेरे को एक आर्ट पीस दिखा. दूर से तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, मुझे लगा बस एक कास्ट आयरन मटेरियल से बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, पर अगर पास से देखो दीज आर मेड आउट ऑफ डिस्कार्डेड सीजर्स. डिस्कार्डेड सीजर्स को वेल्ड करके ये आर्ट बनाया गया है. एंड अगेन ये नॉर्मल यूजेस के लिए नहीं है, दिस इज़ जस्ट मेंट फॉर आर्ट पर्पस. देखिए मुझे इसको समझने में इतनी देर लगी. मुझे लगा बस एक नॉर्मल स्क्रैप आयरन का कुछ बना हुआ है. आई कुडंट अंडरस्टैंड, बट लेटर ऑन आई अंडरस्टूड दैट इट इज़ मेड आउट ऑफ स्क्रैप सीजर्स.
So in our India Art Fair VIP pass, we also had access to the India Art Fair VIP lounge, where they were serving tea, coffee, snacks, drinks, and I could see already a lot of people were seated inside. It was warm, it was ambient, and with a lot of beautiful sculptures, mirrors, and chandeliers as well. So we just grabbed a quick wine and a small cup of coffee because we also needed some break for ourselves as well.
एट टाइम्स आपको इंडिया आर्ट फेयर में ऐसे परफॉर्मेंस आर्ट वाले कुछ ऐसी साइटिंग्स मिल सकती हैं जहाँ पे आपको लोग दिखेंगे जो वेरेबल आर्ट, बॉडी आर्ट, लिविंग स्कल्पचर, हैपनिंग्स, कॉस्प्ले जैसे आपको एवटार्स में आपको दिख सकते हैं. So don't be surprised, it is just their way of depicting an art piece in a very distinct manner. As I wrap up my visit to India Art Fair, I'm leaving with deeper appreciation for scale, diversity, and creativity that define contemporary art today. From established galleries to emerging artists, every space had a unique perspective and a story worth noticing. What stood out most was how art here isn't limited to one medium or style. It moves across cultures, materials, and ideas, bringing together tradition and innovation in a very seamless way. Whether it was bold installations, detailed canvases, or experimental concepts, the experience felt thoughtfully curated and globally relevant. Events like the India Art Fair remind us that art is not just about visuals, it's about dialogue, interpretation, and connection. I hope you liked this video. Thank you so much for joining me on this visit. If you enjoyed this walkthrough and would like to see more experiences like these, don't forget to subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Till then, take care. God bless you all. Bye-bye.